Assalamualaikum and hi everyone, this is Maria. Welcome back to my channel. Those who are new, welcome to the channel. So in today's video I will talk about student visa or study visa. वो लोग जो मलेशिया में स्टडी करना चाह रहे हैं वो कैसे स्टूडेंट वीज़ा हासिल कर सकते हैं, मैं इसके बारे में बात करूंगी और स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को एलैबोरेट करूंगी। रिसेंटली मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स रिसीव हो रहे हैं मेरे इंस्टाग्राम पर और ऑल्सो आई एम गेटिंग कमेंट्स अबाउट स्टडी वीज़ा on my YouTube videos as well, so that's why I thought I should make a video on this so you people could know how to obtain the study visa in Malaysia. So please keep supporting, do subscribe and watch this video till the end. So let's get started. So very first step of obtaining a student visa is to contact with the university. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक पर्टिकुलर कोर्स में इंटरेस्टेड हैं और उसी में अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो आपको एक ऐसी मलेशियन यूनिवर्सिटी को सर्च करना होगा जो कि आपके पर्टिकुलर कोर्स को ऑफ़र कर रही हो और फर्दर आपको ये इंश्योर करना होगा कि क्या वो यूनिवर्सिटी मलेशियन गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है कि नहीं है. सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो आई वुड रिकमेंड यू ओनली गो फॉर दोज यूनिवर्सिटीज़ हु आर अप्रूव्ड बाय द मलेशियन गवर्नमेंट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर्च द यूनिवर्सिटी and make sure that university is offering that particular course and that university is also approved by the government, Malaysian government. So once you have targeted a specific university in Malaysia, the next step is to contact with them. You can contact the university via email and they can respond to you. So आप उनसे contact करें और अपना एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें उनके साथ. एंड वंस यू विल रिसीव द एडमिशन लेटर, सो नाउ यू कैन स्टार्ट योर प्रोसेस टू obtain the student visa. So once you have received the acceptance letter from the university, the next step is to proceed with EMGS. So EMGS is basically Education Malaysia Global Service. So EMGS will help you to proceed with your study visa and first of all you have to go to EMGS website. So don't worry, I will put the link in the description of this video so you can go there and check. So EMGS पे आपको अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है और अपना वीज़ा प्रोसेस को स्टार्ट करना है उस वेबसाइट पर और वहाँ पे आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं लाइक योर ट्रांसक्रिप्ट्स and your acceptance letter, passport size photographs, copy of passport etc. वहाँ पर आपको अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करके सारी डिटेल्स वहाँ पर की इन करनी है और वहाँ पर आपको अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देने हैं. सो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. बेसिकली जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी वो आपको इसके बारे में गाइडेंस प्रोवाइड करेगी. हर यूनिवर्सिटी का एक वीज़ा यूनिट होता है और पर्सन इंचार्ज वीज़ा यूनिट का जो पर्सन इंचार्ज होता है वो आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा होता है वाया ईमेल एंड ऑल्सो यू कैन हैव अ लॉट ऑफ गाइडेंस फ्रॉम योर यूनिवर्सिटी. सो don't worry about creating the account on EMGS. So it's really easy and you will be getting a lot of guidance from your university as well. सो वंस आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया है EMGS वेबसाइट पर, अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपलोड कर दिए हैं तो फर्दर आपको फ़ी पे करना होगी स्टूडेंट वीज़ा के लिए. तो स्टूडेंट वीज़ा के लिए जो फ़ी है वो आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप मलेशिया में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप डायरेक्टली बैंक में पे कर सकते हैं और अपनी जो भी है चालान वगैरह वो अपलोड कर सकते हैं, बैंक चालान वगैरह अपलोड कर सकते हैं EMGS वेबसाइट पर. So after paying your fee and after completing everything on EMGS, you will get a reference number from EMGS. So through that reference number, you can continue receiving updates about your study visa. So I think it takes like 15 to 30 days. Yeah, in 15 to 30 days you can get your student visa and after 15 to 30 days with the EMGS, you will receive your visa letter from EMGS. Yes, you will receive your visa letter from EMGS. जब आपको EMGS वीज़ा लेटर इशू कर देगी तो नेक्स्ट स्टेप है सिंगल एंट्री वीज़ा. आपको लेना है सिंगल एंट्री वीज़ा और सिंगल एंट्री वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी कंट्री. फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में हैं तो आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं मलेशियन एम्बेसी में. आप उन्हें अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं
रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स में जो हमें चाहिए वो है एक्सेप्टेंस लेटर, EMGS लेटर, आपकी ट्रांसक्रिप्ट, पासपोर्ट कॉपी, पासपोर्ट एंड आपकी फ़ोटोग्राफ्स। यस, सो ये सारी चीज़ें आपने भेजनी है मलेशियन एम्बेसी में। एंड मलेशियन एम्बेसी में तो वो आपको कुछ ही दिनों में, लाइक आफ्टर 1 वीक दे विल इशू यू सिंगल एंट्री वीज़ा एंड यू विल हैव अ स्टैम्प ऑन योर पासपोर्ट। सो सिंगल एंट्री वीज़ा आजकल बहुत ही ईजी है ऑब्टेन करना। आप सिंपली नाउ इट्स all the process is online, so you just upload everything on their website, Malaysian Embassy website, and you can easily get a single entry visa in few days, like 2 to 3 days, maximum 1 week. जब आपको सिंगल एंट्री वीज़ा मिल जाए उसके बाद आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं मलेशिया में। एंड मलेशिया में ट्रैवल करने के बाद अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करें और यूनिवर्सिटी आपका पासपोर्ट कलेक्ट करेगी। आपका पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद आपको स्टूडेंट पास इशू किया जाएगा, और जो स्टूडेंट पास का प्रोसेस है वो सारा का सारा यूनिवर्सिटी हैंडल करती है, और ये भी EMGS के साथ ही होता है ये प्रोसेस। बट आपकी जो यूनिवर्सिटी का वीज़ा यूनिट है वो ये सारा प्रोसेस उनके साथ EMG के साथ कोलैबोरेशन करके आपको स्टूडेंट पास इशू किया जाता है। सो ये जो स्टूडेंट पास होता है ये सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर के लिए एक्टिव होता है। आफ्टर 1 ईयर you have to renew your student pass every year in Malaysia, yes, for your studies. So after arrival in Malaysia, you must report to your university within 7 days that you are currently in Malaysia, and you must submit your documents and your passport as well. So your university will assist you with getting student pass, and then you are good to continue your studies. So this is a complete process of getting student visa and starting your studies in Malaysia. So I hope my video will help you a lot to those students who are seeking guidance regarding getting student visa and who wants to start the study in Malaysia. And if you still have any confusion, please do let me know about your queries in comment section, and I will try to reply every one of you. And yeah, so keep supporting and do subscribe please. Thank you so much for watching this video. Take care and goodbye.